Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you guys our server war winning rewards. So actually it was really big day. Actually I would say that last 2 days they were really hard to play the SVS. But anyway, finally I got the rank 5 with help of my friends. So they are the big boys, big players you can say on the server. So thanks, first of all I would say thanks to those guys who helped me a lot. So without help it's very hard to get the rank 5. So दोस्तों पहले तो मैं अपने दोस्तों का थैंक्स करूंगा जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की रैंक 5 के लिए। और रैंक 5 के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी मगर जीत गए। और आज आपके साथ मैं अपने रिवॉर्ड शेयर करने जा रहा हूँ। जल्द ही मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा सर्वर वॉर के बारे में, मगर अभी मैं आपके साथ रिवॉर्ड शेयर कर देता हूँ और आपको बता दूँ कि सर्वर वॉर में जाने से पहले आपको क्या क्या चाहिए। सो गाइज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द रिवॉर्ड्स एंड टेल यू व्हाट यू नीड बिफोर गोइंग टू द सर्वर वॉर। So these rewards, so winning rewards I received because of my rank 5. So 121,000 gems and these stones and everything. All the 36 million food, 36 million woods, stone and iron. The healing speed up. The source of life I received, which I can use now because a lot of troops are wounded and killed. So these 2000 gems, they are because of our ranking, alliance ranking in the server war. So we were ranking 3. You can check in the server war if your alliance ranking 1, 2 or 3 or whichever rank. According to the rank you will receive the rewards. Then I received this because of my rank 5, another reward you can see. So these all together I'm going to share with you. You can see on the top how many gems, resources, everything I have, because before the server war I had 0 and used a lot of gems before, but I'm getting refund. Let's see how this server war is helping. Alright, I have 235,000 gems now, which I can use for the healing or other stuff to purchase the source of life and everything. So let's go back. I have paid so many wounded, and also you can see my troops 2.5 million and already healed up. If you have watched my previous video, there were 117 days which I have done with the gems, and lot of things I have done during the server war because I had to heal up for fighting with the enemies. So दोस्तों मैंने बहुत सारे gems यूज़ किए जो मैंने सेव करके रखे थे। मुझे रिवॉर्ड्स में 2,35,000 जेम्स मिल गए और साथ ही ऊपर आप देख सकते हैं मेरे रिवॉर्ड्स में जो रिसोर्सेज हैं कितनी है। तो ये मेरे पहले वाली वीडियो में देख लेना कि 117 दिन थे ट्रूप सीलिंग के, वो मैंने फिनिश कर लिया जेम्स की हेल्प से। जेम्स मेरे पास सेव थे। चलो सो लेट्स गो, आई शो यू द सुपर वैली इवेंट. Go here, check. I have used 423,625 gems in this server war. Not only this server war, but I used roughly I would say more than 200 something. So whatever I spent in the server war, roughly you can say 250,000 gems. So I have spent that much
and I received from the server वो winning rewards. So दोस्तों मैंने जब विन किया तो मैं रफली कहूँगा 2.5 लाख जेम्स मैंने यूज़ किए थे सर्वर वॉर में, सब कुछ सही हीलिंग के लिए और भी स्टफ़ लेने के लिए। तो मुझे रिफ़ंड मिल गया उसका, क्योंकि आपके रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रैंकिंग टॉप 5 में जाना चाहते हैं उसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा आपको मैंने दिखा दिया। चलो हम बात करते हैं अब आगे, ये चाहिए आपको। सो लेट्स गाइस टॉक अबाउट व्हाट यू नीड। सो यू एटलीस्ट सेव 300,000 or 400,000 gems, because sometimes you don't have speed up. If you have speed up then you don't have to save, but I suggest collect lot of source of life, revive troops. You can see right hand side on the bottom 319 I have at the moment. Maybe I have to purchase with the gems. Source of life is important because when you healing your troops you need these stones, and also make sure you have lot of resources backup, or you have resources in your item box. So where I have saved here you can see. So always hunting or whatever activities I'm doing, I'm saving lot of resources just in case I need to heal up my troops. Prepare for future. I don't say that every SBS you join, if you are not the big coiner, like you are not spending too much money, so prepare for next 2 or 3 months. If you are just concentrating on the server war, you need at least level 30 and unlock level 12 range troop, ground troop, and mounted troops. Mounted troops, they you need for hunting monsters and everything, but when you are going to the server war make sure you ghosting the mounted troops. And for good attacking rate or defense you must get these sage machine as well. Use the layering, because if you have layers then you can get less wounded. So दोस्तों अगर आपके पास layers है troops की, so layering के बारे में मैंने पहले बताया. I explained already guys about the layers of the troops and traps in my previous video. If you can find that video in my channel, that's good. Otherwise let me know in the comment. I will share with you guys that video. So layering is important. Traps, layering is for the defense, traps and troops. And when you are attacking someone, so definitely the troops layering is working. So send highest level, then low, select according to them. So my troops are wounded, that's why I can't show you at the moment, but I have to work on it and later on share with you guys that link which I have uploaded already on the YouTube. So दोस्तों मैं आपके साथ उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा. मेरे अभी वुंडेड ट्रूप्स अगर मैं अभी दिखा देता आपको अदरवाइज, पर कोई बात नहीं. अगर आपको नहीं मिला वीडियो तो मुझे बताना, मैं कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. So guys, you need gems, you need resources, you need source of life. One second. So these source of life, these stones, so I suggest roughly start collecting as many you can. If you have 2000 minimum, that is very good, then that will save your gems in server war. Okay, so what else? You need teleports. I have used so many teleports. So you need around 150 or 200 teleports, advanced teleports, not the random ones.
I'm talking about the advanced teleports, and start saving your server war teleports. One second, I show you in items special. So I have used all of them, but use these teleports, advanced teleports. I have 49 left now. So you need these at least 150 or 200. Start saving every server war. Start saving your server teleports, which will be required in the future when you're going to the server war and coming back to your server. And also you need arrest warrants. You need a lot of arrest warrants when you are searching enemies. I have used more than 200 because I've been locating the enemies with my other device. So why I'm telling you other device? The last thing, the another one, you need one more device, phone or computer. Create your second account or ask your friends or family member. They can use their email, start game with you. And what you can do, you can locate the enemies, share with you with each other, then press. One second, I'll show you. One second. So when you are locating someone, like for example this guy, I want to locate this one. I found him, detail, locate, and I hold these buttons and I'm watching on my second device. As soon as he's teleporting, I quickly press confirm button and I can locate him and quickly teleport and attack, but watch his activity. If he's attacking someone, then, but it is more safer when you are beginner. It's more safer to start on your own server. Don't go to the enemy server for first couple of months. Start saving your server war teleports. If you have a lot of server war teleports, then you can go come back. Or if you are good with the ghosting and other stuff, then you can stay in the enemy server. So whatever you like, you can do. You can learn best killing enemies tricks. You can learn from the BOC and BOG, Battle of Gaugamela and Battle of Constantinople. So दोस्तों सबसे बढ़िया फाइटिंग के बारे में सीखने के लिए ये आपको बैटल ऑफ गोगामेला, बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। और मैंने अभी बताया कि आपको दूसरा अकाउंट चाहिए अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर या अपने ही दूसरे फ़ोन पे नया अकाउंट बना के उसके साथ गेम अपने ही अलाइंस में, सेम अलाइंस में प्ले करें अगर आप SVS के बारे में तैयारी कर रहे हैं। आपको वो लोकेट करना पड़ेगा, लोकेट का बटन प्रेस करके क्विकली लोकेट करना पड़ेगा और देखते रहें उस दूसरे फ़ोन पर कि आपका जो दूसरे सर्वर वाले जो दोस्त हैं या एनिमी कह लो या दोस्त कह लो, अगर वो कहीं लोकेट कर जाते हैं तो उसी टाइम आप प्रेस करके उसको लोकेट कर सकते हैं अपने मेन डिवाइस पे, जिससे आपने सर्वर वॉर जीतनी है। तो ये तरीके थे, आप इस सर्वर वॉर के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें चाहिए, सोर्स ऑफ लाइफ, आपको यहीं दिखा देता हूँ आइटम में जाके। सो आपको ये वाला स्टोन चाहिए, सोर्स ऑफ लाइफ, और आपको 2 लाख या 3 लाख जेम्स चाहिए, जस्ट इन केस हो ना, ये ना मतलब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप जल्दी से हील कर सकते हैं अपने ट्रूप्स को। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए।
तो अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो हीलिंग स्टफ, so you need speed ups, they are most important. Start saving healing speed ups, which is the last thing I would like to discuss. I was running out of the healing speed up just because I have used them when I was hunting the big monsters, and I have used them and also completed the consuming speed up event. So I claimed a lot of resources from that event. So that's why I was running out of the speed ups. So दोस्तों, आपके पास स्पीड अप जो है वो आप सेव कर लें बहुत सारे, अगर सर्वर वॉर की तैयारी में है। So thanks guys, this was the experience going to unlock my wings. So let's see decoration, miracle. So here we go. I have my first wing used, और इसके बाद मैंने वंडर को अनलॉक करना है। तो इसके लिए मुझे चाहिए रिसोर्सेस। मेरे रिसोर्सेस खाए जा रहे हैं, इसके लिए मुझे पहले शेजर डिफेंस जनरल चेंज करना है। मेरे पास शेजर थी जो मैंने सेव करके रखी थी, वेयर हाउस ऑफिसर। ओके, सो आई हैव टू कैंसिल this one. Where is that? Come on. Yeah. So guys, I have saved my consuming, so you can see. So दोस्तों, आप देख सकते हैं consuming food मेरा रुक गया। So requirement is fulfilled. Now I need badges. So I will make another video on this wonder. Thanks guys, thanks for watching. Have a good one. Enjoy your game. Hopefully you enjoyed my video, watching my rewards, and definitely one day you will get the good score, good rewards in the server war. Like me, I was saving a lot of things for this big day. So enjoy your game, have a good one, and start saving at least 2 or 3 months lot of things if you are planning for the server war. दोस्तों, अगर आप सर्वर वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2-3 महीने आप अपना सामान बहुत सारा सेव करें, लेवल 30 करके अनलॉक कर लें लेवल 12 के ट्रूप्स, ताकि आपके एनिमीज़ के लिए आप भारी पड़े। तो आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा मेरे रिवॉर्ड्स का देख के, और आपके भी मन में है कि आपको भी मिले एक दिन, और ज़रूर आपको एक दिन मिलेगा। आप बस थोड़ी सी मेहनत कर लें, 2-3 महीने तक आप सेविंग करते रहें, खर्च मत करें। ड्रैगन बाद में ले लेना, या ड्रैगन ले लें पहले, तो और चीज़ें अपग्रेड कर लें, थोड़ा सा और रुक जाएं, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। थैंक्स दोस्तों, हैव अ गुड वन, एंजॉय योर गेम।